Hello everyone, welcome to another case study and this is for class 11th grade students। और बच्चों ये केस स्टडी है लीला भरोडिया पर, जिन्होंने रिवाइव किया था जयपुर ब्लू पॉटरी को। एंड फॉर योर सब्जेक्ट, going through case studies is extremely important, equally important as going through the units। और एक बार मैं सारी केस स्टडीज खत्म कर लूंगा, देन soon I'm going to start with the units, and then I'm going to guide you completely, from the literature that is mentioned in the unit, and you are going to get extremely benefited from it। Second, uh, I really, thanks those students who regularly, these case studies को watch कर रहे हैं, and they are appreciating it, so a big thanks to them। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा to the students, keep subscribing it and keep sharing it so that like you other students are going to get benefited from it। so बच्चों, आज की केस स्टडी स्टार्ट करते हैं, और आज की केस स्टडी है यूनिट 3, entrepreneurial journey, and it is on Leela Barodia and Jaipur Blue Water। These are the points under discussion: the power of one, the guidelines of her mother-in-law, understanding the craftsman, provided means of support to thousands of people, backing up of the family, and conclusion. Under these 6 points, I'm going to sum up this case study, and I believe every student is going to understand each and every word from this case study, which is exactly the need of an art। So let's take up the first point: the power of one। She here is Leela Barodia. She single-handedly brought prosperity and a sense of pride in craft of hundreds of villagers, made their craft famous world over, and built a business worth 25 crore। बच्चों, अगर आप इस बिजनेस की बिगनिंग देखेंगे तो आपको ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगेगा, विच इज 25 crore। तो व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ लीला बरोडी? कैसे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ब्लू पॉटरी है इसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है, एंड इट इज रियली स्पेशल। अगर इसे रिवाइव किया गया तो लोग इसे श्योरली अप्रिशिएट करें। और बच्चों, आपको पता है ये ट्रेट है एंटरप्रेन्योर्स का, वो सामाजिक प्रॉब्लम्स को एक बार ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन दे यू नो प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम। यही लीला बरोडिया ने। दिस आर्ट वाज नेगेटेड, देयर वाज नो फ्यूचर, बट उन्होंने कहा इस आर्ट को रिवाइव करना इज ओनली माय गोल ऑफ लाइफ, एंड दिस शी हैज डन। नेक्स्ट पॉइंट: behind her success, what worked was towering personality of Mother Teresa and her mother। So बच्चों, जो भी उनको encouragement मिला, जो भी उनको लाइफ के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स मिले, वो मिले फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ मदर टेरेसा एंड हर मदर। क्योंकि जब भी हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे को हमारे रोल मॉडल्स और आइडल्स बहुत सपोर्ट करते हैं। तो लीला बरोडिया का रोल मॉडल थी मदर टेरेसा एंड हर मदर। थर्ड पॉइंट: it always amazed Leela how her mother juggled her various roles। लीला बरोडिया को हमेशा यू नो इस चीज से हैरानी होती थी कि कैसे उनकी मदर सारे रोल्स घर के निभा लेती। उनको ऐसे लगता था शी इज अ सुपर वुमन। पॉइंट नंबर 4 में मैंने मेंशन किया है, विच वर ऑफ अ केयरिंग वाइफ। उनकी मदर एक केयरिंग वाइफ थी, अपने हस्बैंड की केयर करती थी। अ लविंग मदर ऑफ 4 daughters। लीला बरोडिया मतलब उनकी 4 बहनें थी, और उनकी मदर उनकी बहुत देखभाल किया करती थी। एन एफिशिएंट हाउस होल्डर,
with many guests who visited frequently, and above all, a compassionate volunteer of Mother Teresa's orphanages. वो ये सब काम करने के बाद गेस्ट को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, एंड ऑफन शी गोज टू मदर टेरेसाज ऑर्फनेज, और वहां पर एज अ वॉलंटियर वॉलंटियर काम करती थी। तो ये इम्पैक्ट मदरहुड का, मदर का, यू नो ऑफ लीलाज मदर, उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। एंड शी स्टार्टेड थिंकिंग दैट अ सिंगल वुमन कैन डू मोर देन शी थिंक शी कैन। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भाई। और हमेशा आपको पता है कि एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट ही काम अकेले करते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग मिलते रहते हैं, और उनका काम बढ़ता चला जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। द गाइडलाइंस ऑफ हर मदर इन लॉ। वो सिर्फ अपनी मदर से ही प्रभावित नहीं थी, उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से भी बहुत कुछ सीखा। फर्स्ट पॉइंट, according to Leela, it was her mother who created in her a deep sense of compassion for fellow human beings and strong social consciousness. कहते जब उनकी शादी हुई तो उनकी मदर इन लॉ ने उनको सिखाया कि कैसे उन्हें कंपैशनेट, रिस्पेक्टफुल रहना है टुवर्ड्स फेलो ह्यूमन बीइंग, और कैसे स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस रखनी है, लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है, और अपना एक नेटवर्क फॉर्म करना है where people are liking you because of your qualities and behavior. And but this is a very good quality of entrepreneurs. If they are not forming a strong network based on their social consciousness, they are unable to take their business to the next level. This is something very important and mandatory as well. Next point. She grew up in Kolkata and after marriage moved to Jaipur. Leela visited a couple of villages surrounding Jaipur. वो कलकत्ता में पड़ी हुई, और जब उनकी शादी हुई तो वो जयपुर में चली गई, और जयपुर जाने के बाद लीला विजिटेड अ कपल ऑफ विलेजेस सराउंडिंग जयपुर। उन्होंने कुछ एक गांव में गई और वहां पर ऑब्जर्व किया व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। शी वाज मूव्ड टू सी द आर्ट वर्क एंड हार्ड लेबर दैट वाज इन्वॉल्व्ड इन द पॉटरी and ceramic of the village, and yet the villagers lived in unhygienic conditions as they were extremely poor. वो देख के हैरान रहे कि क्या कंडीशन में लोग काम कर रहे हैं, जी रहे हैं। Those who are pottery workers, they are in bad condition, और ये देखकर उन्हें लगा कि this is not something good. They were living in unhygienic, unclean conditions, और as though they are very very poor. तो उनको लगा इनके उत्थान के लिए, इनको एनकरेज करने के लिए, इनके काम को बढ़ाने के लिए, आई हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स, एंड दिस इज व्हाट शी हैज डन, एंड दैट्स व्हाई दिस केस स्टडी इज इन क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत इम्पैक्टफुल रहा है बच्चों, एंड दैट्स द रीजन दीज केस स्टडीज आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक। फोर्थ, she discovered that the wonderful skill and ancient craft dying away before her eyes, and she did not know what she could do about. उन्हें लगा कि ये जो एंशियंट आर्ट है ये मेरी आंखों के सामने खत्म हो रहा है, और अगर कुछ ना किया गया तो इट विल बी टू लेट। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्या करेंगी, बट समथिंग शी इज गोइंग टू डू। कुछ तो वो करेंगी, पर क्या करेंगी उन्हें नहीं पता था, टू रिवाइव दैट आर्ट। And now this is what, bacho, is the trait of an entrepreneur. Let's move on to the next point. Fifth point. When she asked them the reason behind their prevailing conditions as to why they were so poor, their reply was nobody wanted to buy their pot. वो उनके पास गई, उन्होंने उनसे बात करी और पूछा कि आपकी इस कंडीशन के पीछे क्या वजह है, और उन्होंने रिप्लाई दिया सिर्फ एक वजह है कि हमारे पॉटरी को, पॉट्स को, सामान को कोई खरीदना नहीं चाहता। इट इज नॉट
being accepted by people anymore. She had never thought of starting a business alone because she wanted to do something new and concrete. But her grooming and her mindset, inspired of Mother Teresa and her own mother, was yet alive in her. उन्हें नहीं पता था कि वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगी विद दीज पॉटरी वर्कर्स, बट जो उनके दिमाग में इंस्पिरेशन था, जो उनके दिमाग में एक छाप थी ऑफ मदर एंड मदर टेरेसा, that was very inspiring, and that encouraged her to do something for this pottery work by starting a small venture. She got involved with the artisans to save their dying craft. तो उन्होंने कहा इनके साथ काम करना पड़ेगा ताकि इनके इस पुराने आर्ट को बचाया जा सके, एंड शी डिड. Third point, understanding the craftsmen. She was quick to understand their problem, even though their craft was exquisite. That is wonderful. They did not have any modern elements, so she suggested some new design. अब उन्होंने जल्दी से क्राफ्ट्समैन की प्रॉब्लम को समझ ली. इट वाज अ ब्यूटीफुल आर्ट, शी वाज अवेयर अबाउट, बट उनके पास कुछ नए डिजाइन्स नहीं थे, कुछ नए टूल्स नहीं थे काम करने के लिए. तो उन्हें लगा कि शी शुड गाइड देम with new designs and tools so that they can have a new courage in them, and to start their venture different. Second point, the artisans were not ready to believe in her designs until finally one craftsman agreed to try making her design in ceramic hand painted beads. पहले तो उनके डिजाइन्स को आर्टिसंस ने एक्सेप्ट ही नहीं, बट जब उन्होंने बार बार कहा तो एक आर्टिसन ने उनके डिजाइन को एक्सेप्ट किया, और बीड्स होते हैं बच्चों, छोटे छोटे मोती जो बनाए जाते हैं, दे आर बीड्स, और उनको माला की तरह पिरोया जाता है और उनके कर्टेन्स बनते हैं. तो उन्होंने कहा इनके डिजाइन्स को ना मैं इसमें डाल के देखता हूँ, एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी वी आर गोइंग टू रिवाइव आवर दिस pottery making work. Third point, the design was a huge success. ये बहुत बड़ी सक्सेस लेके आया डिजाइन, एंड शी वाज एबल टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द अदर आर्टिजन्स एज. और जैसे वो डिजाइन सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने पसंद किया, तो लीला बरोडिया ने और आर्टिजन्स का कॉन्फिडेंस भी इस प्रकार से गेन कर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. She had started her business with just rupees 500, and quick rotation of money set the business. सिर्फ मात्र 500 रुपए के साथ उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट, और जब रोटेशन बढ़ने लग पड़ा पैसे का, अ, माल बनता था, माल बिकता था, तो रोटेशन होना शुरू हो, उन्होंने उनके बिजनेस को सेट कर. शी डिजाइंड बीड कर्टेन्स विच वर लार्जली एक्सेप्टेड. बच्चों अगर आप देखेंगे ना, पुरानी मूवीज में भी आप देखेंगे, तो कर्टेन्स होते थे जो मोतियों से बनते थे, मोतियों की झालरें बनती थी और उनके कर्टेन्स बना करते थे. तो कहते हैं वो बहुत ज्यादा ना लोगों द्वारा एक्सेप्ट किए जाने लगे. इसे अंडरलाइन कर देते, विच इज वेरी वेरी. फिफ्थ पॉइंट, the flourishing business required a proper business setup, and so Leela formed a company, Neerja International. Neerja is her youngest sister. तो अगर बिजनेस जब उन्होंने देखा फ्लरिश कर रहा है, तो उन्हें लगा कि इसको एक प्रॉपर कंपनी बनाना चाहिए, एक नाम देना चाहिए. तो उन्होंने अपनी सबसे छोटी बहन के नाम पर एक कंपनी स्टार्ट की, और इसका नाम रखा उन्होंने नीरजा इंटरनेशनल. सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस एज नीरजा इंटरनेशनल. इट वाज द नेम ऑफ her youngest sister. Sixth point, the unique and exquisite pottery which was made by the villagers and Leela sold it was named जयपुर ब्लू पॉट. और जो एक्सक्विजिट बहुत सुंदर पॉटरी
वर्कर्स बना रहे थे और लीला बरोडिया जिसको बेच रही थी, उसका उन्होंने नाम रखा जयपुर ब्लू पॉइंट अंडर नीरजा इंटरनेशनल दे वर सेलिंग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Seventh point. Buyers wanted to know the history behind the products they buy, and Leela told them all that she had learned from the villagers. और जो भी बायर्स आते थे वो उनसे पूछते थे कि क्या हिस्ट्री है इस क्राफ्ट के पीछे. तो लीला ने जो भी विलेजर्स से वर्कर्स से सीखा था सुना था वो उनके साथ वो शेयर किया. ड्यूरिंग इट्स 200 years of history in Jaipur, blue pottery had its periods of expansion under state patronage that started from 19th century of Maharaja of Jaipur, Savai Ram Singh. तो उन्होंने कहा कि जयपुर की 200 साला हिस्ट्री में ब्लू पॉटरी का एक्सपेंशन हुआ बाय द सपोर्ट ऑफ महाराजा ऑफ जयपुर सवाई राम सिंह टू इन द 19th सेंचुरी. तो उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया. देन शी गिव क्रेडिट फॉर इट्स रिवाइवल. इस ब्लू पॉटरी के रिवाइवल का क्रेडिट उन्होंने दिया था कमला देवी चट्टोपाध्याय को, जिनकी फोटोग्राफ मैंने यहाँ लगाई है, so that you can check it out, that who was that great freedom fighter who has supported the revival of Jaipur blue pot. Earlier, in the 19th century, that is 1800, महाराजा ऑफ जयपुर सवाई राम सिंह टू उन्होंने उसको रिवाइव किया था. उसके बाद इट वाज बीइंग रिवाइव्ड बाय कमला देवी चट्टोपाध्याय, who promoted cottage industry and handicraft all over the India, and राजमाता गायत्री देवी after her. तो उसके बाद राजमाता गायत्री देवी, जिनकी पिक्चर यहाँ मैंने आई हैव जस्ट पुट इट ओवर हियर टू टेल यू हु शी वाज. और उनके बाद राजमाता गायत्री देवी ने जयपुर ब्लू पॉटरी बहुत सपोर्ट किया, एंड दैट्स द रीजन इट इज स्टिल नोन टू एवरीवन. Fourth point, provided means of support to thousands of people. Then, under the guidance of Leela Barodia, it received fresh lease of life. और जब लीला बरोडिया ने टेक ओवर किया तो एक नई जान आ गई किसके अंदर, इन द दिस पॉटरी वर्क. टुडे शी प्रोवाइडेड a livelihood to thousands of people. आज वो हजारों लोगों को लाइवलीहुड, जॉब्स, वर्क एंड मनी प्रोवाइड कर. Second point, she had some early hardships in the export of these products, but all got set with Leela's link with Faith and John, who were the owners of Anu. शुरू शुरू में उनको प्रॉब्लम हुई, but later on उनके जो लिंक थे with Faith and John, उनकी सपोर्ट से she could easily take it, sell it out of the country as. फेथ, अब मैं बच्चों को बताया था कि फेथ एंड जॉन कौन थे. फेथ इज एन आयरिश एंड जॉन इज एन इंडियन पर्सन. दे हेल्प लीला टू एक्सपोर्ट हर प्रोडक्ट, और उनकी जो फर्म थी उसका नाम था अनु. मांग, तो आपको कहीं पर भी डिफिकल्टी नहीं होगी. दिस इज वेरी सिंपल, बट यस यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पीपल. फेथ वाज एन आयरिश पर्सन एंड जॉन इज एन इंडियन, और उन्होंने मिलकर लीला को हेल्प किया to export her products to other countries. Point number 5, backing up of the family. Slowly as the company grew, her husband joined hands with her to help her in the business. जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ तो फैमिली सपोर्ट साथ आ गया. उनके हस्बैंड ने उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया in her business. Although married into a joint family, her mother-in-law was a huge support to her, encouraging her to keep doing the business. वो एक जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी उनकी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उनकी जो मदर इन लॉ थी, शी वाज अ बिग सपोर्ट टू हर, एंड बिकॉज ऑफ हर द बिजनेस going. Third point, Leela was able to revive the dying craft as well as increase the standard of living of the craftsmen or artisans who were associated with this traditional craft.
और लीला ने ना बच्चों इस बिजनेस को रिवाइव किया, इस क्राफ्ट को रिवाइव किया, बट उन्होंने उन आर्टिसंस की यू नो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव किया। रेगुलरली उनको काम मिलता था, रेगुलरली दे वर वर्किंग, रेगुलरली द प्रोडक्ट्स वर बीइंग सोल्ड। तो ऐसे में पैसा आया और जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज। फोर्थ पॉइंट, इन फैक्ट व्हेन द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट Bill Clinton visited Jaipur, all Jaipur blue pottery which was gifted to his mother-in-law, Bill Clinton's mother-in-law, was from Leela Barodia, Nirja International. So बच्चों जब फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने जयपुर विजिट किया था, तो उनकी मदर इन लॉ को जो भी ब्लू पॉटरी गिफ्ट की गई थी, इट वाज बीइंग गिफ्टेड फ्रॉम नीरजा इंटरनेशनल, a firm started by Leela Barodia. So here we have come to the last point, conclusion. It is evident from the hardships and success of Leela that persistence and perseverance will bring success to women. अब आप खुद सोचिए बच्चे, उनका तो बिजनेस भी नहीं था, उनकी तो शादी भी वहां नहीं हुई। वो कहाँ रहती थी? कलकत्ता। शादी हुई जयपुर में। जब उन्होंने आसपास की विलेजेस को विजिट किया, शी रियलाइज कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है, बट स्टिल दैट पोटेंशियल इज अनटैप्ड, और मुझे इसके रिवाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी। एंड शी डिड, शी रिवाइव्ड, and she has taken this culture or this art of making pottery to great heights. Second point, for an Indian woman who must play multiple roles in her life and walk the fine line between managing her home and the work front, entrepreneurship often the path that gives her this balance. अब देखिए बच्चों, जो इंडियन वुमेन है, जो होम मेकर्स है, वो वैसे ही सारा दिन बहुत सारे काम करते, उसके बाद इस प्रकार के वेंचर्स को चलाना ये तभी पॉसिबल है when they are aware about what entrepreneurship, and they are encouraged to work under this title entrepreneur. और फिर उसके बाद they can easily take up their venture and खुद भी grow होते हैं, और people those who are associated with them, they also grow. So it is an encouraging story of Leela Barodia, and it is going to provide direction to my 11th grade students that please pay attention to case studies like this, learn so many ideas from it, and try to write down your answers in the paper. So bacho, I'm concluding this case study now. Let's sum up. We have taken these 6 points in the case study: the power of one, the guidelines of a mother-in-law. What an exclusive example. In spite of being married into uh, you know uh, a big family, her mother-in-law supported her a lot. Understanding the craftsmen provided means of support to thousands of people, backing up of the family, and so this is a very good case study for the students to understand the traits of entrepreneurs and what they do for the society. So bacho, based on today's case study, I have brought in 3 new questions for you, and kindly answer these questions in your own words. The first question is, how Leela Barodia single-handedly brought prosperity and a sense of pride in craft of hundreds of villagers? Explain. Second, she was quick in understanding the problems of artisans in order to help. How? Explain. Third, write a short note on the family support she got from her family and in-laws. So these are the 3 questions you should work on in order to thoroughly understand this case. Along with it, I have also brought in, question answers with hints. This is our USP, this is our UVP. आप जितने भी मेरे केस स्टडीज चेक करेंगे, मैंने सबके अंदर ये 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, बट yes, this is for the first time I have started the practice questions for you.
So keep checking my channel regularly, keep taking up the case studies, keep understanding them, keep writing answers, and keep becoming very strong students who can take up the papers well for entrepreneurship. अब लेते हैं ये 10 क्वेश्चन जिनके हिंट्स मैंने आपको साथ में प्रोवाइड किए हैं. The first question is she here is Leela Barodia. She single-handedly brought prosperity and a sense of pride in craft of hundreds of villagers, made their craft famous world over, and built a business worth how many crore? 25 crore. Second, behind her success, what worked was the towering personality of Dash and her mother, who was a great personality that has encouraged her throughout her life, and it was none other than Mother Teresa. Question number 3. According to Leela, it was her father who created in her a deep sense of compassion for fellow human beings and strong social consciousness. Is it true or false? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे as true or false. बच्चों, the question is false. It was not according to Leela's father. It was her mother who encouraged her to have a deep sense of compassion for fellow human beings and strong social consciousness. Fourth point, she grew up in Calcutta and after marriage moved to which part of the country? It was Jaipur. She had some early hardship in the export of these products, but all got set with Leela's link with Faith, who was an Irish person, and John, who are the owners of an organization called Anoki. Six, Faith is an Irish and John is an Indian. They helped Leela export her product. Whether this is true or false, undoubtedly this is true. Slowly, as the company grew, her mother-in-law was a huge support to her, encouraging her to keep doing the business. True. Leela was able to revive the dying craft as well as increase the standard of living of the artisans who were associated with this traditional craft. Whether true or false, ये questions पूछे जा सकते हैं आपसे in the form of true or false. तो answer इसका है true. Leela was able to revive this dying craft and she has increased the standard of living of these artisans. Last but not the least, for an Indian woman who must play multiple roles in her family or in life and work, the fine line between managing her home and the work front, entrepreneurship is often part that gives her this dash. And what the dash stands for? Balance. So, Bacho, along with these 10 questions with hints and previous 3 questions for practice, I come to the end of today's class. Thank you very much for being here. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो you'll wait. I'll share another case study with you. And the best part about our case studies is that they are in detail. They are from your book. They are having inbuilt questions, objective type questions. And if you keep attending our case studies and our sessions, I'll assure you, you are going to score very good marks in your. So, Bacho, I believe this case study is of help to you. Till we meet next time in another case study. Bye bye for now. Take care, everyone. Keep subscribing, our channel. Keep, liking it and sharing these videos with other students as well, so that they can get, benefited as you are getting. And the best part is this is something we are, doing free of cost. We're not charging anything from any student. So please, you know, uh, इस इन केस स्टडीज को पढ़िए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू टेक अप योर पेपर्स
uh, with too much of strength. Okay, so this is a presentation by Mavericks India Solution, and with the Mavericks India, you will always. So, bacho, this is Lucky Push. Bye bye for now. See you in the next case study. Take care.